Hello everyone. Welcome to the next lecture on the IIT JAM Mathematics 2025. Today I will explain you question number 1 to 10 with the help of the shortcut tricks. Myself Dr. Harish Garg. You can follow my YouTube channel where you can find the playlist of the IIT JAM solution. In this playlist you can see the various lectures related to the IIT JAM Mathematics and statistics. I hope you can subscribe my YouTube channel as well. Now the first question is related to the infinite series, and this is a very simple question. If you look about this series, that is start from the 1 to infinity minus 1 raised to power n plus 1, you can see pi by 2. I can consider x is my pi by 2. Fine. So this series becomes 2x raised to power 2n plus 1 over 2n factorial. Now your target is to find the sum of the series. That means the sum, that is this series must be convergent. Only then you can able to find the sum of the series. How you can find the sum? If you substitute n is equal to 1, is a positive. This is my x cube divided by 2 factorial. If you substitute x is 2, x raised to power 5 over 4 factorial, then plus x raised to 7 over 6 factorial, and so on. Now, if you look clearly, if you closely look about this series, which series come in your mind when you look about the 2 factorial, 4 factorial, and so on? This is the cos of the x. Fine. It's a 1 minus x square over 2 factorial plus x4 over 4 factorial, and so on. Clear? Now I can take an as x square. So I can take x is my common. Then it is x square by 2 factorial minus x4 by 4 factorial plus and so on. Is it okay? Now you can compare them. I can multiply with the negative sign. Fine. Then it becomes, I can plus 1 and minus 1, or instead of that you can simply write here, this is minus. Fine. I can write this series is my, I can find the value of, it will be 1 minus cos x. And what is the value of the x? X is pi by 2, cos pi by 2 is my 0. So the answer is plus pi by 2 is my correct answer of this problem. And you can see that it's a very simple. You have to just rearrange the given series in the given statement form. For more detail about this infinite series, I must recommended you must watch about my this lecture which I already uploaded, and this lecture will help you a lot. आप आराम से इस लेक्चर को अगर आपने अभी तक नहीं देखा, you can watch it again so that you will learn how you can solve the problem in a simple manner. Look at the second question. Second question is related to which of the following will give the exact differential equation. Again, अगर आपने ये लेक्चर मेरा पहले से सुना हुआ है, that is the exact differential equation, you can see this exact differential equation, then you can solve this problem in a very simple manner. What is the exact condition is partial derivative of m with respect to y must be equal to the partial derivative of n with respect to x. So can you find the partial derivative with respect to y? It is e raised to power x cos y minus 2 sine x. That is a partial derivative of m with respect to y. Now look at the options. I need a minus of 2 sine x. If you take the derivative with respect to x, it will be the 2 cos x. It will cancel. It's a 2 cos x cancel. It's a minus of 2 sine x minus of 2 sine x. I need a e raised to power x cos x with respect to x. So B is the right answer. A is cancel out. So you get the answer. B is the correct option. Look at the third question. Dear student, kindly like and comment on the video. If you want, I can upload the next 10 questions very soon. You can like and comment on this video as well. Let f with the two function which are defined here, which are the following statement is true about the differentiability. Do you remember my shortcut tricks? Do you remember which I have explained in my differentiability lecture, or you can say the continuity and differentiability lecture? If you already watched this lecture, you can get this answer in a 5 seconds. What is the shortcut tricks? As I tell you, if you have the function fx, say x raised to power m sine 1 over x raised to power n, or
your function is of the form x raised to power n m cos 1 over x raised to power n. This function is differentiable only if m is strictly greater than of the n. Fine. And it is continuous for all these values of the m and n are here. Clear? Now they are talking about only for the differentiability. Your target is to check about m is greater than n. If you clearly look about this case, in this case, m is 1, n is 1, which is not satisfied. So g is not continuous. So here g is g is not a differentiable. So B option cancel. G is differentiable. C option cancel. Now look at this case. How you can write this function? I can write this function is my x square sine 1 over x. Now clearly say m is my 2, n is my 1, which satisfied this condition. Yes, f is my differentiable at x is equal to 0, but g is not. Right answer is A is my correct answer. अगर स्टूडेंट्स अगर आपने मेरे ये पी वाई क्वेश्चन सीरीज और द प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, अभी भी समय है आपके पास, देखिए और सीखिए कैसे आप क्वेश्चन को क्विकली 10-15 सेकंड में सॉल्व करते हो. हर क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक से एक्सप्लेन कर रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. They are talking about the continuous only. So again you can see about this lecture, that is a continuity. Fine. क्या शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी मैंने इसमें? जब भी आपको कंटिन्यूस चेक करना, फॉर एग्जांपल पहले जी पे चेक करते हैं. इट्स अ कोसाइन. We all know cosine function is lies between -1 to +1. I can multiply e raised to power x on the both side. Then this is my g of x. Fine. Now your target is to check at the 0. So now you can take the limit as x approaches 0. The left hand side will be -1. This will be limit of gx at x approaches 0, and this is 1. Now clearly say the limit is not unique. If the limit is not unique, that means it is my not continuous. So g is not continuous. Is it okay? So G is not a continuous, so the C option cancel. G is continuous, that is the B option also cancel. Now the same concept I can apply on the first part. You can see the modulus of the sine 1 over x is lies between 0 and 1. Cos of x is lies between -1 to +1, and if you take the product, it will be lies between 0 and +1. Is it okay? Now you can multiply both side by mod of x raised to power 1 by 8. So this function will be my fx. Fine. And this will be mod of x raised to power 1 by x. Now again your target is to check the continuity at x equal to 0. I can take x approaches 0. The left hand side is a 0. This function is my fx. And this value will be my 0, and you can see this will give you the unique limit. So once it's a unique limit, that means yes, this is my continuous. F is continuous and G is not a continuous. A is my right answer of this problem. देखिए कितना आसान तरीकों से मैं आपको बता रहा हूं. आप एक बार लेक्चर को सुनिए, और जिन्होंने लेक्चर सुना है, आई एम वेरी श्योर दैट दे विल गेट दी गुड मार्क्स इन दिस IIT JAM मैथमेटिक्स सॉल्यूशन. मैं इसके बाद IIT JAM मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का भी सॉल्यूशन अपलोड करूंगा. जस्ट वेट फॉर द फ्यू मिनट्स मोर. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस? वेरी सिंपल. आप डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर सुन लीजिए. आप इसके अंदर यू कैन सी डिफरेंशियल इक्वेशन. कंप्लीट IIT JAM मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स के आपको सॉल्यूशन शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ इस कंप्लीट वीडियो में मिलेंगे. एक बार इस वीडियोस को पूरा देखिए. आप, आई एम वेरी श्योर दैट आप बहुत कुछ सीखेंगे और आप कमेंट में बताएंगे कि कितना कुछ सीख पा रहे हो. चलिए इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लो एकदम से क्विकली. 8m plus 16 is 0. So रूट क्या आ गया आपके पास? 4 and 4. So the solution will be C1 e raised to power x, C2 x e raised to power 4x, or alpha 1. So you can see it's a minus of 4. This option is cancelled. -4 cancel. Now both are same. Now what are the coefficients? You can see it's a 2
So I can say 1 over d square minus 8d plus 16 of twice. Now you can see this is a case of failure, 2 times the case of failure. I can take that 2 times derivative. What is the 2 times derivative? First time derivative, second time derivative into 2 e raised to power 4x. So the answer will be plus, what is the answer is x square e raised to power 4x is the right answer of this problem. It said twice, that's a wrong. A is my correct answer of the problem. Okay, look at this another one. Which of the following statement is my true? T is a linear transformation. Now, can you get this answer in a 5 second? If you watch my this rank nullity theorem, fine, that is a linear transformation, PY question of the linear transformation. What I told you in the shortcut tricks. What I told you, if T is the mapping from V to V, which is the same, अगर ये V और V same हुआ, then T is 1 1 if and only if T is on 2. फाइन, अगर ये V से V है, मान लीजिए V आपका R2 है, R2 से R2 है और R3 से R3 है और R से R है, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए। तो अगर T11 हुआ तो T on 2 भी होगा। तो यहां देखिए दोनों तरफ सेम है, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन कभी नहीं होगा। T is not a 1 1 but T is on 2, ये कभी नहीं होगा। T is 1 1 and T is, ये हो सकता है। T is 1 1 T is not on 2, ये कभी नहीं होगा। T is a not 1 1 not on 2, ये भी हो सकता है। फाइन, मतलब अगर ये 1 1 हो गया तो on 2 होगा, अगर on 2 नहीं होगा तो 1 1 भी नहीं होगा। अब कैसे चेक करेंगे, इसकी मैट्रिक्स बना लेते हैं। T को 1 1 कैसे चेक करते हो आप, इसकी मैट्रिक्स बना लो। x का कोफिशिएंट 1, y का 0, z का 1, x का 2, y is 3, z is 5, x is 0, 2 and 2. This is my matrix T. अब इसका डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। इफ दिस डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो देन what does it means? T is 1 1. So can you find the determinant of T? 1, 6 minus 10 plus 1, 4 minus 0. So what will happen is a minus 4 plus 4, that is a 0. That means T is my not 1 1. If T is my not 1 1, that means it is not on to. So the last option is my correct answer of this problem. तो आपको एग्जाम में सिर्फ अगर आपने ये लेक्चर सुना होता है पहले से, तो आप क्या करते हैं, आप सिर्फ एक मैट्रिक्स बनाते हैं क्विकली से, इसका डिटर्मिनेंट निकालने में आपको कितना समय लगता है, 15 सेकंड से ज्यादा समय आपको नहीं लगता एग्जामिनेशन में सॉल्व करने के लिए, बिकॉज आपने पहला और दूसरा ऑप्शन तो देखकर ही डिस्कार्ड कर दिया इस शॉर्टकट ट्रिक से। तो आपका आंसर बी, सी और डी में से कोई एक हो। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लाइक और कमेंट जरूर करेंगे इस वीडियो पे भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। M कोई एक मैट्रिक्स है, 0 इज वन ऑफ द आइगन वैल्यू। फाइन, ओके, सो मैं इसको पहले एक नाम ले लेता हूं, बार बार लिखना पड़ेगा मेरे को। m की पावर 4 प्लस m, तो आपका टारगेट क्या है, a इंटू 101 निकालना। फाइन, मैंने क्या बताया आपको, जब भी आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में चलना हो, आप जब भी मैट्रिक्स में अगर आपको आंसर कोई भी स्टेटमेंट दिए रखी हो, आपका आंसर हमेशा ही आइगन वैल्यूज में चाहिए। अगर आप इसको आइगन वैल्यू की तरह देखें, तो अगर मैंने इसको ये प्रूफ कर दिया तो इसका आंसर लैम्डा क्या हो जाएगा, आपका आइगन वैल्यू। और अगर आप ऑप्शंस में देखो तो ये वैल्यू इसकी इसकी लैम्डा आइगन वैल्यू 1 है। इसको अगर आप कंपेयर करोगे, इसका मतलब 5 आइगन वैल्यू होगी। 5 किसकी, ए की, इसका मतलब ये 2 है और इसका मतलब ये 17 है। फाइन, अगर ए की आइगन वैल्यू 1 आई तो क्या इसका आंसर कभी 1 हो सकता है, नहीं होगा कभी भी, तो दैट विल बी कैंसल। 5 हो सकता है इसका आंसर 5, और 2 हो सकता है, 17 हो सकता है, वो हम चेक कर लेते हैं। इसका 0 एक आइगन वैल्यू है m का, 0 इज द आइगन वैल्यू ऑफ द m। 0 किसी के आइगन वैल्यू हो तो इसका क्या मतलब है, डिटर्मिनेंट इज अ 0। इफ द डिटर्मिनेंट इज 0 यू कैन सॉल्व देम। Twice x minus 0 minus 1, 0 minus of 2 is my 0. So that will be 2x plus 2 is 0. x की वैल्यू आपकी -1 आ गई। फाइन, तो x will be my -1। नाउ अब आप हर रो का सम देखिए, ईच रो का सम कितना आ रहा है,
1 आ रहा है। अगर हर रो का सम आपका 1 आ गया तो इसका मतलब एक आइगन वैल्यू आपकी 1 हो गई। फाइन। अब आपको 3 आइगन वैल्यूज चाहिए, एक आइगन वैल्यू 0 है, एक आपकी 1 आ गई, तो तीसरी आप कैसे निकाल सकते हो? ट्रेस से। इसका ट्रेस कितना आ रहा है? 2। तो दूसरी आइगन वैल्यू भी आपकी 1। फाइन। अगर आपकी m की आइगन वैल्यू 0 1 1 है तो आपकी a की आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगी? 0 प्लस 0 0, 1 plus 1 2, 1 plus 1 2. So 2 is the eigenvalues of this answer. So B is the correct answer. C and D are my wrong answer of this problem. क्योंकि आपका a की आइगन वैल्यू 2 मिल गई तो आप इसको ट्वाइस ऑफ लिख सकते हो ना इस चीज को, तो इसका मतलब आंसर इज माई 2 इज दी आइगन वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे है। अगेन जैसे ही आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला लेक्चर सुना आप इसका आंसर क्विकली निकाल दोगे। P2 पॉलिनोमियल, इसके बेसिस क्या होते हैं? 1x x स्क्वायर। फाइन। आपका टारगेट क्या है? डिटर्मिनेंट बनाना है, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना। इसके बेसिस क्या है? 1। तो सबसे पहले px को 1 लीजिए, तो ये पॉलिनोमियल क्या बन गया आपका? इसको इस तरह से लिखते हैं, दिस इज द 1x x स्क्वायर। फाइन। और यहाँ पे भी 1x x स्क्वायर, दिस इज द P2। अब t ऑफ 1 कितना होगा? P of x plus 1. What is the P of x plus 1 is 1. So this is a constant. Coefficient of x 0, coefficient of x 0. अगर आपने P of x को x लिया है तो आपका T of x कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? P of x plus 1. What is the P of x plus 1 is x plus 1. Constant 1 है, coefficient of the x is 1, x square is 0. अगर आपने P of x को x square लिया है तो T of px कितना हो जाएगा? P of x plus 1, that is x plus 1 square. अगर आप इसे ओपन करोगे तो x square plus 1 plus 2x, तो आप सब्सटीट्यूट करते हैं, कोफिशिएंट कांस्टेंट इज 1, कोफिशिएंट ऑफ x is my 2, x square the coefficient is my 1. Now the determinant of m, this is my m. Fine, where m is the matrix. तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया आपके पास? 1. फाइन। सो पहला ऑप्शन कैंसल। डिटर्मिनेंट इज अ नॉन जीरो, तो इसका मतलब रैंक ऑफ द m कितना हो गया आपके पास? नंबर ऑफ द कॉलम वेक्टर्स, रैंक इज 2, कैंसल। 1 इज द ओनली आइगन वैल्यू। ओके, सो यस, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। आइगन वैल्यूज क्या है इसकी? 1 1 1। 1 इज द ओनली आइगन वैल्यू, दैट्स फाइन। नलिटी, nullity of the m कितना होगा? number of the column vectors minus rank of the matrix, so that will be 0. So this option is cancelled. C is the only right option of this problem. Okay, this is a I skipped the 9th question because this is related to the group theory and the group theory is not is my subject. Okay, look at this last question. Your target is to find the double integration, and the recent lecture I have uploaded on the double integration. Fine, just 2 weeks before of the MST of this IIT JAM paper, I have uploaded the double integration, and you will get the right answer in a 5 second. How? Can you draw the graph of x is root y? That is y is equal to x square. Fine. X is equal to 1. This is x is equal to 1. This is y is equal to x square. And then y is equal to 0. This is the line of y 0. And this point is my 1 comma 1. And this is the line of y is equal to 1. Can you find the shaded portion? Your target is to find y is equal to x square to y is equal to 1. So your common area is my this portion. Fine. Now you can change the limits. So it's a 3 e raised to power x cube dy into dx. I can change the dx to be the dy. So can you find the limits? What is the value of the y is 0? What is the value of the y? This is the curve of y is equal to x square. And the limit of the x is my 0 to 1 because this maximum limit is my 1. So keeping integration with respect to y, so आपका ये x constant हो जाएगा. So it will be 3, ये outside हो गया. Integration of the dy is my x square. Fine.
अब इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी, एक्स क्यूब को अगर आपने टी लिया है तो 3x के डी टी आपका इंटीग्रेशन में चला जाएगा. सो फ्रॉम 0 to 1. सो द आंसर इज e-1 इज माई राइट आंसर ऑफ दिस. तो देखिए कितने आसान क्वेश्चंस थे आपके पास, सारे के सारे 10 क्वेश्चंस आप पूरा शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ आपने सॉल्व करा है. आई होप यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल. Don't forget to watch my these lectures. These are very beneficial, not only for the IIT JAM as well as the GATE and the CSR net examinations as well. We will see the next lecture on the remaining 10 next 10 questions related to the IIT JAM 2025. Till then, you can share this video with your friends. Happy learning always, and don't forget to subscribe my YouTube channel. Best of luck, students. Happy learning.